Dear students, today I will deliver a lecture on quadratic residues for the students of BA, BSc, second sem, first year, mathematics paper first, number theory and trigonometry. What is quadratic residues? Definition of this is, let m be a positive integer and a be any integer such that a and m are coprime. If the quadratic congruence x square congruent to a mod m has a solution, let m be a positive integer and a be any integer, 0, positive, negative, and a and m are coprime. कोप्राइम कॉमन नहीं है कुछ भी, ठीक डेट्स ऑल. इफ द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए mod m हैज़ ए सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन हो देन ए इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो m. ए इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो m और सिंपली क्वाड्रेटिक residue of m, quadratic residue of m, or simply quadratic residue of m. If one has no solution, अगर ये equation number 1 है, this has no solution, then a is called quadratic non-residue modulo m. Then a is called quadratic non-residue modulo m. In other words, a is a quadratic residue of m. In other words, a is a quadratic residue of m if and only if am is coprime and a is congruent mod m and a is congruent mod m to some square integer, in other words, a is quadratic residue of m if and only if am is coprime and a is congruent mod m to some square integer x square. Otherwise, a is quadratic non-residue of m. Otherwise, a is quadratic non-residue of m. ठीक. अब क्या है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट अस फाइंड द क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ 6 or 5. For example, let us find the quadratic residue of 5. Here p equal 5 equal an odd prime. p equal 5 है, odd prime है. So RRS mod 5, RRS क्या होता है? Reduced residue system. Mod 5 is the set S equal to 1 2 3 4 1 2 3 4. एक कम होता है, ठीक. So एक CRS होता है, एक RRS होता है, complete residue system. ये reduced residue system. To find out how many of the integers in set S are quadratic residue of 5, कहते हैं ये 0 1 2 3 4 में कितने, इस S सेट में कितने quadratic residue 5 है. We must know which of the congruence, we must know, हमें ये जानना होगा, which of the congruence x square congruent to a mod 5 are soluble where a lies in the set S. कितने हैं जो soluble हैं, a कहाँ लाई करता है, इस S सेट में है.
To find out how many of the integers in set S are quadratic residue of 5, we must know which of the congruences x square congruent to A mod 5 are soluble, where A lies in the set S. The squares of the integers in set S mod 5 are 1 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 होता है। देखो 5 डिवाइड 1 माइनस 1 होता है, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5 होता है। 3 का स्क्वायर 9 कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5 ये भी होता है। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया ना, कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 ये भी होता है। Thus the quadratic residues of 5 are 1 and 4। 1 का स्क्वायर लेते हैं तभी आता है, 4 का स्क्वायर लेते हैं 1 and 4। Quadratic residues of 5 are 1 and 4। It can be seen that x square congruent to 1 mod 5 has solutions namely 1 and 4, and x square congruent to 4 mod 5 has solutions namely 2 and 3। टू एंड 3 सॉल्यूशन किसके हैं? ये हैं एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5 और ये 1 mod 5 एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 1 और 4 हैं। एक वेट ठीक ना, व्हाट इज इट? and x square congruent to 3 mod 5 has no solution। 3 mod 5 x square congruent to 3 mod 5 इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। therefore 2 and 3 इसमें से 1 2 3 4 and 2 and 3 are quadratic non-residue 5। 1 and 4 has solutions namely 2 and 3, whereas x square congruent to 2 mod 5 and x square congruent to 3 mod 5 has no solutions। therefore 2 and 3 are quadratic non-residue 5। ओके, रिमार्क है, क्या रिमार्क दे रहा है या नोट है? the integers of the set S are divided equally among the quadratic residue and non-residue of S रेजिड्यू 5 इक्वली डिवाइड होता है। द इंटीजर्स ऑफ द सेट S आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज एंड नॉन रेजिड्यूज ऑफ 5। ठीक, 2 रेजिड्यूज हैं, 2 नॉन रेजिड्यूज हैं। रिमार्क है, सिंस एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 has solution for m greater than equal to 1। since कहता है x square congruent to 1 mod 5 has solutions for all m greater than equal to 1, therefore 1 is a quadratic residue mod m for all m। since x square congruent to a mod 5
since x square congruent to a mod of m implies x square congruent to a plus m mod m. Therefore, a plus m is a quadratic residue or non-residue according as a is or is not a quadratic residue. Since x square congruent to a mod m implies x square congruent to a plus m mod m. Therefore, a plus m is a quadratic residue or non-residue according as a is or is not a quadratic residue. अगर a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो a प्लस एम भी होगा, अगर a इज़ नॉट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू तो a प्लस एम भी नहीं होगा. क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और नॉन रेजिड्यू अकॉर्डिंग एज a इज़ और इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू. रिमार्क 2 हो गया. थर्ड, एनी टू क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज मॉड p आर डिस्टिंक्ट. कोई भी दो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज मॉड p डिस्टिंक्ट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ दे आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉड p. एनी टू residues mod p are distinct if and only if they are incongruent mod p. So it follows that all distinct quadratic residues of p lie in any RRS mod p. So it follows that all distinct quadratic residues of p lie. So it follows that all distinct quadratic residues of p lie in any reduced residue system mod p. Reduced residue system mod p. Reduced residue system mod p. So it follows that all distinct quadratic residues of p lie in any, इसमें लाई करा रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड पे. कहता है ब्रीफ टेबल ऑफ क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज मोड p. जैसे p है 3 है तो क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज 1 होगा, 5 है 1 4 होगा, 7 है 1 2 4 होगा, 11 है 1 3 4 5 9, 13 है p 13 है तो 1 3 4 5 9 10 12, 1 3 4 5 9 10 12, 11 नहीं आएगा. देख 7 है तो 1 2 4, 5 है 1 4, 17 है 1 2 4 8 9 13 15 16, 19 है 1 4 5 6 7 9 11 16 17, 23 है तो 1 2 4 2 3 4 6 8 9 12 13 15 16 18, 29 है 1 2 1 4 5 6 7 9 13 16 20 22 23 24 25 28, 31 है तो 1 2 4 5 7 8 9 10 14 16 18 19 20 25 26, 37 है तो 1 3 4 7 9 10 11 12 16 21,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36. The quadratic non-residues mod P can be obtained by deleting quadratic residues. The quadratic non-residue mod P can be obtained by deleting quadratic residue delete कर दो mod P from RRS mod P, ठीक है. नॉन रेजिड्यू को डिलीट कर दो. The quadratic non-residues mod P can be obtained by deleting quadratic residues mod P from RRS mod P, ठीक. Some important theorems related to quadratic residues. Theorem first है, let A congruent to B mod P. If A is a quadratic residue mod P, then B is also quadratic residue mod P. अगर A quadratic residue mod P है तो B भी quadratic residue mod P होगा. तो proof, if A is quadratic residue mod P, then x square congruent to A mod P has a solution. But A is congruent to B mod P दे रखा है, ये गिवन है. तो implies x square reflexive property congruent to B mod P also has a solution. Hence B is a quadratic residue mod P, ठीक. नोट है, if A is a quadratic non-residue mod P, then B is also a quadratic non-residue mod P. non-residue mod P है तो B भी non-residue mod P हो. Theorem 2 है, let P be an odd prime. P क्या odd prime है, then P has exactly half P minus 1 quadratic residues mod P which are congruent mod P to the integers 1 का square, 2 का square, 3 का square, P minus 1 by 2 का whole square. तो this comes in MDU 2014. दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं. If P is an odd prime, then P has exactly half into P minus 1 quadratic residues mod P, ठीक. Which are congruent mod P to the integers 1 का square, 2 का square, 3 का square, P minus 1 by 2 का square. Let S इस सेट को ले लो, consisting of set 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, P minus 1 by 2 का होल स्क्वायर. लेट S बराबर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, P minus 1 by 2 का होल स्क्वायर. सिंस A P आर को प्राइम, A और P क्या को प्राइम है, दिया हुआ ये, हाँ दिया हुआ. लेट P be an odd prime. Since A and P are co-prime for 1 less than equal to A less than equal to P minus 1 by 2. Since A और P क्या co-prime for 1 less than equal to A less than equal to P minus 1 by 2. Therefore A square is a quadratic residue mod P. इसलिए क्या हुआ है, therefore A square is a quadratic residue mod P. A square is a quadratic residue mod P. Implies every number of S has a quadratic residue mod P, क्योंकि x is equal to A is a solution of A square, x square congruent to A square mod P. A square is quadratic residue mod P, ठीक. Every number of S is a quadratic residue mod P. Implies every number of S जो है ना, ये
ए कहाँ लाई करता है, इसके बीच में 1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू p minus 1/2. Every number of s is a quadratic residue mod p. Also s has of p minus 1 integers. S has of p minus 1 integers. Now we shall prove that all the integers in S are pairwise non-congruent incongruent mod p. Now we shall prove that all the integers in S are pairwise incongruent mod p. Suppose a square congruent to b square mod p. a और b क्या है, 1 और p minus 1/2 के बीच में है, and a is different from b, implies a square minus b square congruent to 0 mod p. हो गया ये, implies a minus b, इसके टुकड़े बना लिए, a plus b congruent to 0 mod p. Implies either a minus b congruent to 0 mod p or a plus b congruent to 0 mod p. But to less than equal to a plus b less than equal to p minus 1 less than p. कहता है a प्लस b करें ना तो वो 2 और p माइनस 1 और लेस देन p इसके बीच में आता है. Implies p is not congruent to a plus b. p does not divide a plus b. ठीक. So a plus b is not congruent to 0 mod p. Therefore a minus b is congruent to 0 mod p. Implies a is congruent to b, which is contradiction. Implies a equal b. इससे क्या implies होता है a equal b, तो contradiction आ गई. Thus our supposition is wrong. इससे क्या हो गया, thus our supposition is wrong. Hence all the numbers in S are incongruent mod p. Congruent नहीं है, incongruent है. तो it remains to show that there are no more quadratic residues of p. p के इससे ज़्यादा quadratic residue mod p नहीं होंगे. If possible, suppose C is quadratic residue of p other than integers in set S, then x square congruent to C mod p is solvable. Let x equal to C naught be a solution of this congruence. तो x naught का square congruent to C mod p. C naught क्या है, 1 और p minus 1 के बीच में होगा. Implies C equal x C naught का स्क्वायर. दूसरा सॉल्यूशन p माइनस सी नॉट होगा. एक सॉल्यूशन सी नॉट होगा, दूसरा p माइनस सी नॉट का होल स्क्वायर मॉड p होगा. implies either c naught का स्क्वायर और p माइनस सी नॉट का स्क्वायर is included among the integers in set S. This contradicts our supposition. The C is not a new quadratic residue of P. उन्हीं में से कोई repeated है. Hence P has exactly half into P minus 1 incongruence quadratic residue which are congruent mod P to the integers 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, P minus 1/2 का स्क्वायर. ठीक. Next theorem is every odd prime P has exactly half into P minus 1 quadratic non-residues. तो
Proof of this is we know that RRS mod P is the set 1 2 3 P minus 1. RRS में reduced residue system mod P, इसका सेट क्या होता है 1 2 3 P माइनस 1 तक होता है अगर P है तो 1 से स्टार्ट हुआ है. Also the list quadratic residue and non-residue P together form RRS mod P. ये फॉर्म करता है reduced residue system. By अभी previous theorem की है. By previous theorem P minus 1 by 2 integers of this set are quadratic residue P. अगर ऐसा है तो P minus 1 by 2 integers of this set, इसके आधे by previous theorem P minus 1 by 2 integers of this set are quadratic residues of P. Thus it follows that the remaining half P minus 1 integers are quadratic non-residue of P. बाकी बच गए ना जो हाफ P minus, वो quadratic non-residue of P होंगे. नेक्स्ट थ्योरम है Euler's criteria. Let P be an odd prime. Let P be an odd prime and A, P is coprime. Then A is quadratic residue or quadratic non-residue mod P according as if P be an odd prime and AP are coprime. तो Euler's क्या कहता है? Then A is quadratic residue or A is quadratic non-residue mod P according as अगर A की पावर P minus 1 by 2 congruent to 1 mod P हो तो ये रेजिड्यू होगा, और A की पावर P minus 1 by 2 is congruent to minus 1 mod P हो तब नॉन रेजिड्यू होगा. तो this theorem we will do in the next lecture. Euler's criteria. You can view this lecture on college YouTube channel named www.bljscollege.com, or you can view also this lecture on WhatsApp group name Maths BA BSc TSM1. Still, if there is any difficulty, you may contact me in any mode you feel convenient. Thank you. Thanks. We will meet in the next lecture.